Hello students, now today we are going to start our new chapter of business study, that is staffing. So let us understand what is the meaning of staffing first. So this staffing is a function of the management which start after organizing. In organizing what we discussed was that in organizing we try to organize the company, means we create various job positions and decide the power and authority, responsibility, all such kind of thing. And I told you that there will be some kind of manager and there will be some workers under him, like workers to workers we are taking here. So this is a vacant thing. Okay, this is a job position which is vacant, and also the duties what this particular person is going to perform in the company is also decided. Okay, so all these things we discussed in the previous chapter. Now what happens in staffing? In staffing we will appoint for this vacant position, for this vacancy we will fill the job. Okay, so this is a vacant place wherein we are going to select the people or appoint the people for this particular position as per their qualification, their abilities, their experience, etc. Okay, so this is the process of staffing. Every company wants good candidates in their organization because the success of the organization depends on such kind of good candidates. Okay, now let us understand the meaning of it here. After planning and organizing, the next function of the manager is to perform staffing function. Though staffing function manager fills all the jobs created by the organization function. So as I told you, in the organization function we were creating all those job positions. Now these job positions will be filled by appointing the correct employees. Right employees are very important. Okay, it is very important to select the right peoples. Okay, so here staffing involves or consist of manpower planning. Okay, so here in manpower planning what you have to do, you will have to find out the number of employees, how much employees are required. So planning is very important here. Then after that, recruitment means it is just like just telling the people or the candidate which is about to be selected, or you can say potential employee who is still not a part of your company, but in future maybe that prospective candidate can become a part of your company. So that is called as recruitment. For this recruitment, many times you must have seen advertisement in the newspapers and all. So this is recruitment. It is a positive process because here no rejections are made. Okay, now next will be selection. In selection what happens, all the resumes will be there, all the resume will come to the company, and then company is going to select the best one from those many resumes. So there will be some rejections, so this is a negative process. After that, training will be done. Then compensation means how much salary to be paid, that is decided. And after that, promotions and the maintenance of the managerial personnel means the employee who will be working in your company. So their maintenance is also just dependent, because HRM or human resource management is also function in this staffing. So these employees which are selected are just like a asset. Okay, so asset for the company, so they are being taken care of by the company. So the company really take cares like providing them transportation facilities or canteen facilities like that. Okay, then promotion, this thing promotion, definitely every employee look for promotions, of course. So promotion and all these things are decided under staffing only. So everything is related to employee here in this chapter. Now staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. So it is all about selecting the right person at the right time and sending them at the right place. So who is the right person? Say for example, if you're looking for accounts kind of job, then BCom person is going to be the right choice here, right choice for you at the right time. Suppose this is the right time you want that person, so today is the right time. Okay, then you'll have to send him at the right place also.
Okay, right person at the right time at the right place means if you're selecting a bcom person, then you have to select and send him in the accounts department or finance department somewhere. You cannot send him to this other kind of function, like another function like production department. You are sending that person, so he's of no use in that particular department. That person is specialized in commerce, so you'll have to send him in finance field only or finance department only, because he will not be productive in production department. So that is very important, that person should be sent at the right place only. Okay, now staffing has been described as the major function for filling and keeping filled positions in the organization structure. So organization structure is nothing but just a kind of flowchart wherein you can see so many jobs which are vacant. So you will be filling those jobs by appointing the peoples. Okay. So here we will be simply filling the jobs. So this is a managerial function. Whose responsibility this is? This is the responsibility of the middle level management. Mostly they are dealing with such kind of things. Okay, because they are the head of the department, so they will be looking into it. So this is the filling of the vacancies. So this is achieved by identifying the number of employee required, followed by recruitment. So what are they doing here? They will first find out how many employees are required for a particular position. Suppose today a new branch of bank has been opened in your city. So what they will be doing, they will definitely be finding out that how many people are required for that particular branch. So that is the kind of thing which you can say identifying the number of employees which are required. Okay, then only they can come out with vacancy, okay, in the newspaper and all. So for that, recruitment, selection, placement, promotion, appraisal and development of personnel to fill the roles designated into the organization in structure. Okay, so after that, all this placement and promotion, selection, all this process consists of this staffing only. Okay, so these all are part of staffing. Okay, all these things which are performed under this particular function. Now after this, let us go through this importance. Okay, now what is importance? The first importance will be filling the roles by obtaining competent personnel. So what the company wants here, they want competent personnel. Personnel means employee. Competent, who is competent, who can really work for your company in a very productive manner. So that person is called as competent person. Okay, so staffing function is needed to fill the job position. There will be no use of job position until unless they are occupied by some employees, and it is through done through staffing function only, that the employees are appointed to fill the vacant job. So here definitely they'll be selecting some competent peoples, and they will be appointed, and they will be working at particular position in the company, like manager or assistant manager, like that. Any kind of, it can be any kind of vacancy, like it can be data entry operator job also. Okay, then second importance is placing right person at the right job. So I told you already, right person means if you're selecting an engineer, then you'll have to send him at the right place. You will have to send him in production department only. Otherwise there is no use of sending engineer into account department. So simple point is this. Okay, then growth of enterprise. Growth of enterprise means what? See, when you appoint efficient staff means good people you're appointing, what happens? Staffing ensures continuous survival and growth of the enterprise. An organization grows with the effort of the employee only. See, every organization, they want good employees. Why? Because their growth depend on good employees only. If a company is very good in selection of good quality employees, then what will happen? Definitely the future of the company will be bright. The next point is optimum utilization of human resources. Okay, so through manpower planning, job analysis, we can find out the number of employees. Okay, so what is they are doing here? They are referring to manpower planning. You will have to identify that how many peoples are required, and job analysis is done, like what kind of job, what kind of work it will be, and what will be the requirement for particular job. Okay, like for accounts you will be requiring, or audit you will be requiring a chartered accountant, of course. So you are going to appoint an internal auditor for your company, who will be a chartered accountant, of course. Okay, and for accounting and all, you can select any kind of person who is having knowledge of tally software and all. Okay, or ERP. Okay, so this kind of people you can select. Okay, so this is called as job analysis. We can find out the number of employees and type of employees required in the organization, so there are no chances of overmanning and shortage of underutilization of resources. So
suppose if your capacity is there, company wants some number of employees and you're not having that many employees, then definitely the burden will be created on the people. Okay, and of course they will be tired because they are be overburdened, they will make mistakes, so it is not right. So here the utilization should be complete. And suppose if you are having too many employees in your company, what will happen? Already if you are having too many employees and only four are required, suppose only four employees are required and you are having six, so additional two, they will be unproductive because actually they are not required in the company. Okay, so you want optimum utilization, so it is very important to do the job analysis correctly, that how many people are required, then only it should be done. Now help in competing. Now two organizations, when two companies can easily acquire same type of physical financial resources, what help in organization to win with the other is efficient staff. See here what they are telling, that every company is having good resources like machinery and equipments, computers and all, but the thing which leads them to win is definitely efficient employees. Okay, so they help in competing. If you having good employees, they can compete for you. Then sixth, improve job satisfaction and morale of the employees. How this is connected with the staffing function? See, in staffing function, this does not end with just appointment. It doesn't mean that staffing means simply appointing the person. It is not like that. You'll have to train him, you'll have to give him promotion, compensations and all. So all these things motivate that person, and once when his morale will be boost up, he will definitely be productive at work. Okay, so this is a function. Now key to effectiveness and to other functions. Now this point you can leave out actually, but it is just a key to effectiveness to the other function. Why they are telling like that? Because these employees are the one or human being which have been selected in staffing, they are the one who are going to perform every kind of job. Okay, so they are the ones who are just kind of key to effectiveness of the other functions, because all these kind of activities in the company are performed by the human being, and you are selecting peoples only here in staffing. So that's why they are telling that they are key for the effectiveness of the other functions. Okay, so because all the functions are performed by the human being, and human being join the organization by staffing function only. So this is just a kind of general point. Now staffing and HRM. So what is the difference between staffing and HRM? See, I already said a little bit about this human resource management. So human or peoples are called as resource here. What is resource? Assets. They're just like fixed assets. Okay, or you can simply call them assets of your company. But here, what is the difference between these two? Staffing and HRM. So yeah, human resource management is a part of management process which develops and manages human element of the enterprises, considering their knowledge, skills, creativity, talent and potential for contributing towards organizational objectives. So it is a part. See, human resource management is what? It is a part of management which just develops and manages the human element. This line is very important, which develops and manages the human elements of the enterprise. Means what they are saying, that human resources in the company are simply done. See here they're saying that the peoples or humans are the resource for them, they are just like assets. So they will be taken care by the company. Okay, because when they will take care, definitely the motivation will be boost up in the employee, and morale will also boost up, so definitely he will be working nicely for you. So here all the knowledge, skills, creativity are improved here. Consistent training you can give through them, you can give them promotion. So this is how you boost the morale of the employee. Okay, now human resource management involves determining the organization need of the human resource, recruiting and selecting the best employee, training, developing, compensating and rewarding the employee. It also include activity related to liaison with the government, trade union. So as we are already discussing about this, so under this human resource, the best employee they will select, recruit. Because why they are doing all this recruitment appointed? Because they want to select the best. Then after this they are going to train. Why they are training? To make him more productive. Okay, then developing him. Developing means providing some
trainings of the manager or like that. Okay, because in future he is going to become manager also, so you'll have to provide training like good communication skills training you can provide. You can train him on MS Excel and all, or some kind of software, so that he will be more productive. So this is just like a development. So human resource management is just not related to this just kind of appointment of the people. It is just like taking care of these employees. Okay, this is the meaning of human resource management. But staffing is just a function in which simply means what? Selection of good employees. That's it. Now, after this, generally when these functions are carried out at the small level in the small organization by every manager, we call it as a staffing function. See, in the small company, what happens? They don't have this HRM or human resource management process. So basically, these kind of employees will be just exploited by the company there. But in case of big companies like Reliance India Limited, or if you talk about some multinational companies and Ford and all, so here they really take care of the employees. Like Infosys, you must have heard about these companies. So there you will find this human resource management, and this human resource management is really taking care of them. Okay, so this is just a kind of meaning of it. Now let us come to the point. See, the present day human resource management concept includes the following activity. This will give you a better picture here. See, human resource planning is done. Okay, they determine that how many number of peoples are required in the company, and to just fill this vacant jobs, because this vacancy comes only after finding that how many peoples are required, then only you can come out with the vacancy. Then employing people, okay, means recruitment, selection and also these all these things are activity which will be performed. Then career growth. See, it is not about just appointing the people, सिर्फ लोगों को काम पे रख लिया, अपॉइंट कर लिया, ऐसा नहीं होता है. इसके बाद उनकी करियर ग्रोथ में भी इंप्रूवमेंट देना. फॉर दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग देम विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी कराना है. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल. ईयर में एंड में क्या होता है? सी, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल हैपन? परफॉर्मेंस अप्रेजल विल बी डन. ओके, तो आपके मैनेजर जो भी रहेंगे वो आएंगे, वो आपको देखेंगे आपने पूरे साल में कैसा काम किया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज योर सैलरी एंड प्रमोशंस विल बी गिवन टू यू. So that is performance appraisal. Then motivation are done by financial and non-financial incentive. Financial means monetary, salary increment. Non-financial is what? Where you are not giving money but still you are appreciating that person. Appreciate करने से भी वो काफ़ी उसका moral boost होता है. Certificate देना, appreciation certificate that can be given. Then sixth point is compensation or remuneration. It is the most important thing. Remuneration means salary, wages you will have to give them, because ultimately every employee is working for salary only. Sun point, providing social security and welfare of the people. So you will have to make him secure at the workplace. So social security means all these kind of, see, security means two types. It can be in the company also he should feel safe, and in terms of social security like PF contribution or provident fund contribution should be there. So it is just like providing him some social security benefits if something happens, like ESIC is there. So some insurance scheme is also there. If something happens, then he will be taken care by this company. So all these kind of schemes, hospitalization facility like that, are provided by the company under it. Or not, it is not like every company is providing. Few companies provide such kind of facilities. Then review and audit of personal policies and procedure. Now audit happens here also. HR की भी audit होती है, वहाँ पर भी check होता है. Okay, वहाँ पे policies procedures को check किया जाता है under this, and they find that how much efficient your human resource management is there in the company. How many people are satisfied. देखो आपने promotion क्या होता है, HR audit क्या होता है, अकाउंट्स के ऑडिट बहुत बार सुना होगा कि क्या वहाँ पे अकाउंट चेक होते हैं, एंट्रीज चेक होती हैं. ठीक है, एचआर में क्या होता है? लोगों को जिनको आपने अपॉइंट कर लिया, आपने उनको अप्रेजल दे दिया. ओके, अब अप्रेजल से हो सकता है कि एम्प्लॉय खुश नहीं हो सकता है कोई अच्छे इंसान को आपने प्रमोट ही नहीं किया, ये हो सकता है. सो व्हाट हैपन, दे विल टेक फीडबैक इन दिस एचआर ऑडिट. और एचआर ऑडिट में क्या होता है, जब पता चल जाता है दैट काफ़ी एम्प्लॉय खुश नहीं है आपके, ये जो आपने प्रमोशंस वगैरह दिए, तो दैट शोज द इनएफिशिएंसी ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स टीम. आपकी ह्यूमन रिसोर्स की जो टीम है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही है आपके एम्प्लॉयज़ का. तो यही होती है एचआर ऑडिट. ओके, now this is actually not important, but for your knowledge it is good, so just remember it. Now let us come to the next part, that is staffing process. So a staffing process is what? It is just kind of step by step process. So what is staffing process? Let us understand here.
Okay, and management already we learned about these activities. All the functions here like planning, organizing, directing, controlling, staffing are performed by every manager. Okay, so staffing is also a function just like other functions planning, organizing है वैसे ही staffing भी एक simply एक function होता है, ठीक है. बट इसमें स्टेप्स क्या होती है? फर्स्ट होती है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, सॉरी मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की ज़रूरत है, हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड इन द कंपनी, दैट इज द थिंग. सबसे पहले आपको ये पता ना, देन ओनली यू कैन कम आउट विद द वैकेंसी. तभी आप वैकेंसी लाओगे न्यूज़पेपर में कि 500 एम्प्लॉय चाहिए, 5000 एम्प्लॉय चाहिए, वैकेंसीज हैं, तो इस तरह से वैकेंसी आती है. तो कैसे होता है, हाउ दिस हैपन्स, लेट अस फाइंड आउट. स्टाफिंग प्रोसेस बिगिन विद द एस्टिमेशन ऑफ द मैन पावर रिक्रूटमेंट, which means finding out the number, okay, and type of employees needed by the organization in near future. Now what are they doing here? They're finding out the number of the employees. How manpower requirement is not only to find out the number needed but also the type of people. Type of means what should be the qualification, education, background of the people for whom to need to appoint. While assessing the type of manpower required, company should also make policy regarding the number of people to be appointed from backward classes, women, minority, etc. नाउ एस्टिमेटेड मैन पावर रिक्वायरमेंट से सबसे पहले इसमें आपको कैसे पता करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है. आपको देखना पड़ता है जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है उसका, ये सब क्यों चेक करना पड़ता है, क्योंकि आप उसको रिक्रूट कर रहे हो. और बैकग्राउंड यही नहीं, उसका पर्सनल बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है. क्यों? क्योंकि इफ़ इज़ बिलोंगिंग टू सम क्रिमिनल एक्टिविटी लाइक पास्ट में कंपनी में कुछ फ्रॉड किया है, so you are not going to select such a kind of person because उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ब्लैक लिस्ट किया हुआ एम्प्लॉई है. So no need to select such a kind of people. Okay, so here आपको देखना पड़ता है कि किसको सिलेक्ट कर रहे हो एंड फॉर व्हाट पोजीशन यू आर सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पीपल. तो उसके लिए होता क्या, ऐसी ऑल दिस पीपल्स बहुत अलग अलग क्लासेस से आते हैं, किसको कहाँ रखना है. लाइक फॉर लोअर लेवल पीपल्स यू डोंट नीड लाइक फॉर cooking purposes. If suppose you want some employees for canteen for the employees, who are you going to select? Then definitely some women's will be required, or minority peoples will also be required over there, so there will be some vacancies for such kind of thing. Like in government jobs also we are having some vacancies for this minority peoples. Okay, so this is what happens in companies also. Now, for estimating manpower recruitment, company will take the following steps. So two things are there: workload analysis and workforce analysis. Okay, then comparison is done between workload and workforce analysis. ये बहुत important है. Workload क्या होता है? See, ये important है, the required finding number of type of employee required to perform the various job designed in the organization structure. ओके, तो यहाँ पर हम नंबर पता लगाते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है और किस तरह के लोगों की ज़रूरत है किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड एज वर्कलोड एनालिसिस. ओके, नाउ सपोज कुछ अकाउंट्स का जॉब है, अकाउंट्स की जॉब में हमको मालूम है कम से कम 10 पीपल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, उतना वहाँ पर रहेगा. वर्कलोड एनालिसिस यही रहता है कि इतने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, हमने पता कर लिया 10 लोगों की ज़रूरत होती है, इतना वर्कलोड है यहाँ पर इस पर्टिकुलर. अगर आप ऐसे अपॉइंट करना चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए तो वो चीज़ हो जाती है. से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ स्कूल, okay, and you need some teachers for that, so you'll अब जस्ट गेट दैट नंबर कि कितने लोगों की कितने टीचर्स की ज़रूरत होगी. तो वो नंबर जो रहता है आपको बताता है एक्चुअल वर्कलोड कितना रहता है और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है वहाँ, ठीक है. देन वर्क फोर्स एनालिसिस ये क्या रहता है? सी, ये तो नई कंपनी की बात हो गई. अगर कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, ओके, और आपको और उसको एक्सपेंड कर रहे हो कंपनी की, तो आपको और एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ रही है, तब ये वर्कफोर्स एनालिसिस काम में आता है. इट मीन्स एनालाइजिंग existing workflows or employees already occupying the job position and how many of them are overburdened or underburdened. ओके, सो ओवरबर्डन मीन्स व्हाट, जहाँ पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर. हो सकता है 4 जने बैठे हुए कंपनी में बट वो जो काम देख रहे हैं वो 8 के बराबर देख रहे हैं, ठीक है, ओवरबर्डन है. और अंडरबर्डन भी हो सकता है वहाँ पर 8 बैठे हैं और काम 4 का भी नहीं है, तो ये अंडरबर्डन सिचुएशन हो गई. तो वर्कफोर्स में पता चल जाता है कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी लोगों की ऑलरेडी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फालतू बैठ के काम कर रहे हैं 4 एक्स्ट्रा. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयज. लाइक बैंकों में आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत फ्रिक्वेंट ट्रांसफर कर रहे हैं. तो क्यों कर रहे हैं, वाई आर देयर ट्रांसफरिंग पीपल, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ के काम कर रहे हैं और दे विल अभी
ट्रांसफर टू सम अदर प्लेसेस वेयर नीड इज देयर, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी, मैन पावर, और जहाँ पे रियली ज़रूरत है वहाँ पर उनको भेजा जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज वर्क फोर्स एनालिसिस। तो फाइंड आउट किया जाता है कि कितने लोग रियली वहाँ पर काम कर रहे हैं और कितने लोगों के पास ज़रूरत है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किए जाते हैं। एंड वर्कलोड एनालिसिस व्हाट, कि वहाँ पे जो भी जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है, एस्टिमेट है, मतलब कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी फॉर स्टार्टिंग सम काइंड ऑफ वर्क, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्कलोड एनालिसिस। ओके, जैसे कि आज आप एक शॉप रन करते हो, आपने वहाँ पे 6 लोगों को काम पे रख रखा है, आपने एक और शॉप कहीं डाल ली, तो आपको पता है पहली शॉप पे 6 जने काम करते, तो उस शॉप को भी उतना ही बड़ा मैंने बनाया है, तो वहाँ पर भी 6 लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, वर्कलोड इतना होगा। पर मैंने देखा कि वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 6 नहीं, वहाँ पे 8 लोगों की ज़रूरत है, तो 8 लोगों की हमने फाइंडिंग कर लिए नंबर, तो दैट इज़ वर्कलोड, क्योंकि वर्कलोड वहाँ पे ज़्यादा था, तो उस तरह से हमने पता कर लिया। या फिर हमारी जो पहले की शॉप थी, हमने देखा वहाँ पर काम करने के लिए 4 जने ही इनफ है, तो मैंने कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह पे भेज दिया, और जितने लोग थे लाइक 2 लोगों को हमने अपनी नई शॉप पे भेजा, और बाकी के जो थे वो आपने अपॉइंट कर लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि क्या किस तरह की यूनिट है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंपनी और बैंक, वट एवर इट मे बी। तो दिस हाउ दिस थिंग इज डन। देन कंपैरिजन इज डन। सो कंपैरिजन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से कंपेयर किया जाता है, तो इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू गो थ्रू इट। ओके, नाउ रिक्रूटमेंट, नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट हियर। रिक्रूटमेंट इज व्हाट? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी रेज्यूमेस अलग अलग फील्ड्स के, देखो वैकेंसी लेकर आती है कंपनी। ओके, द कंपनी विल कम आउट विद द वैकेंसी because they already calculated how many people are required in the company. Now when they will come with this vacancy, this is called as recruitment, which is a positive process. So they will be welcoming every single resume from every field. Like when suppose for take example of Reliance India Limited, they are coming out with this vacancy, so everybody will be applying, MCom, BCom, BSc engineers, IT firm, IT engineers, mechanical engineer, all these kind of people will be applying, सब अप्लाई करेंगे, तो सबके रिज्यूमेस का बंडल वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, कंपनी इसको इकट्ठा करती है। दिस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव प्रोसेस, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं होता, किसी को मना नहीं किया है। ओके, सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ inducing the people to apply for the job in the organization. After assessing the number of type of employee required, the manager tried to more and more people should apply for the job, more and more people should apply for the job, the organization can get more choice and select better candidates. तो यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स रहते हैं वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आता है सबसे पहले, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, एंड दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट विल बी फ्रेम्ड इन अ वेरी नाइस वे, बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है, और वहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉय लालच में आ जाते हैं, क्योंकि कंपनी में अच्छे अच्छे पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं जो कि ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं, वो भी अप्लाई करते हैं, प्लस फ्रेशर्स भी अप्लाई करते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, if we can fulfill the requirement from inside the organization through transfer and promotion, then it is very economical. Okay, अब ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो ठीक है, दैट इज रिक्रूटमेंट, पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। बट हियर अगर आपकी कंपनी के अंदर ही कुछ लोग आपको मौजूद है जो कि ट्रांसफ़र लेके आ जाएं या प्रमोशन दे दिया जाए, लाइक फॉर मैनेजरियल पोजीशन, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू गिव समबडी ट्रांसफ़र एंड मेक हिम अ मैनेजर, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है अंदर ही कंपनी में, और ये सस्ता भी पड़ता है। बट ये आप तब कर सकते हो जब आपके यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट नहीं हो, या कुछ ही पोस्ट आ रही हो, लाइक 10-20, तो इजीली यू कैन मैनेज इन विद इन द कंपनी, देयर इज नो नीड टू कम आउट विद द वैकेंसीज, ये इंटरनल ही हो जाता है कि किसी को प्रमोशन करके मैनेजर बना दिया और बाहर वैकेंसी नहीं निकाली। ओके, बट कभी कभी निकाली भी जाती है, क्योंकि कई बार हम बाहर निकालते हैं वैकेंसी, क्योंकि उससे होता है क्या, सी व्हाट हैपन्स, यू गेट गुड कैंडिडेट समटाइम, सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे एड्स आते हैं कि न्यूज़पेपर में कि बाहर से जो लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से उनको बेटर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मिल सकते हैं वहाँ से, तो दैट इज़ द थिंग। ओके, नाउ and fast, but generally organization has to fulfill its requirement from outside the organization. I already told you about this. The to recruit the people from outside organization, they contact placement consultants, employment exchanges here. तो कहाँ कहाँ पर वो लोग पता करेंगे, कहाँ से रिक्रूट करेंगे? Placement consultants. So there are some placement agencies which does the function of
अपॉइंटिंग द पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट कंपनीज रहती हैं जो कि आपका रेज्यूमे आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो और वो लोग आपका काम करेंगी। ओके, या तो ये किया जा सकता है, आप भी अप्रोच कर सकते हो प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज को, वो आपका जॉब ढूंढने में हेल्प करती हैं। आइदर कंपनी भी उनको कॉन्टैक्ट करती है कि उनको भी एक अच्छे कैंडिडेट की ज़रूरत होती है तब, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ओके, रोजगार कार्यालय, गवर्नमेंट जॉब में हमारे रतलाम में भी यही चीज़ है, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, वहाँ पर भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो वो चीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम रजिस्टर करने से पता चलता है कि आपको जॉब रिक्वायरमेंट है, वहाँ से भी एक तरह से ये गवर्नमेंट की प्लेसमेंट एजेंसी होती है। ओके, जैसे रतलाम में रोजगार कार्यालय हो गया वैसे। देन बट द मोस्ट कॉमन वे टू रिक्रूट फ्रेश टैलेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। पर आज क्या चलता है, फ्रेश टैलेंट लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कम आउट विद एडवर्टाइजमेंट। देन कंपनी एडवर्टाइज इन द न्यूज पेपर एटसेट्रा फॉर मैनी जॉब सीकर विल रीड एंड दे विल अप्लाई फॉर द जॉब। जब न्यूज़ में आती है, खबर आती है, तो एवरीबडी विल बी एक्साइटेड एंड दे विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर द जॉब। डजेंट मैटर वो जॉब मिलता है कि नहीं, बट दे विल अप्लाई। ओके, जब भी अच्छे पैकेजेस दिखते हैं द पीपल विल कम। देन व्हाट हैपन, सिलेक्शन स्टार्ट। It refers to the choosing the most suitable candidate to fill the vacant job position. The candidate is done through various processes like test, interview, etc. Okay, so when selection start, you will have to reject. जैसे रेज्यूमे बहुत सारे सिलेक्ट कर, बहुत सारे रेज्यूमे हमने इकट्ठे कर लिए थे रिक्रूटमेंट में, रिजेक्शन नहीं मारता। रिजेक्शन कब मारते हैं, रिजेक्शन हम मारते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। और सिलेक्शन कैसी प्रोसेस होती है, इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजेक्शन करते हैं और यहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, टेस्ट होते हैं। अगर उसमें कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है तो उसको हम बाहर कर देते हैं, इंटरव्यू राउंड से भी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जो अच्छा नहीं लगा उसको कंपनी ऐसे ही बाहर कर देती है। दैट इज कॉल्ड अ सिलेक्शन। Now, here in selection, the number of selected candidates is less than the number of rejected candidates. That is why the selection is called as a negative process also. The main objectives are to select the best among the many or best among the candidates, to make the selected candidate realize that how seriously things are done in the organization. So here see, if everybody will be selected तो image क्या बनेगी कंपनी की, कि यहाँ तो कोई भी ज्वाइन हो जाता है। ओके, इट इज़ वेरी इजी टू ज्वाइन देयर। तो ऐसा नहीं है, रिजेक्शन मानने से ये होता है कि कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू भी बनती है कि इतना इजी नहीं है उस कंपनी में सिलेक्ट होना। लाइक इन केस ऑफ TCS, इन्फोसिस, इट इज़ नॉट इजी टू क्रैक द इंटरव्यू। ओके, सो वहाँ पर जाना मीन्स बहुत एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि कंपनी जो ऐसा करती है वो बेस्ट एम्प्लॉय ही चाहती है, दैट्स वाई दे आर डूइंग सिलेक्शन वेरी इन अ वेरी रिजिड मैनर। नाउ, placement and orientation. What is placement? Placement refers to the occupying of the post by the candidate for which he is selected. After selection, the employee is given appointment letter and is asked to occupy the vacant job position. Placement and orientation, two things are written over here. Okay, so placement में क्या होता है, प्लेसमेंट में आपको उस जॉब पे बैठा दिया जाएगा, आपको प्लेस कर दिया गया, जिस जगह पे आपको बैठ के काम करना है, यू विल बी सेंड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, तो कोई आपको सिलेक्ट कर लिया तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, आपको उस जगह पे ले जाके बैठा देंगे। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन बाद में होता है। ओरिएंटेशन कुछ दिन बाद होता है, 1-2 दिन बाद होता है स्टार्ट। ये क्या रहता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको फैमिलियर कर देना कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशन से, उसके पूरे एनवायरनमेंट से आपको फ्रेंडली एक ट्रेनिंग के थ्रू एक फैमिलियर करना। इट इज़ जस्ट सिंपली डन टू acquaint द स्टूडेंट्स according to the condition of the company. So it is just kind of प्रोग्राम फॉर द न्यू एम्प्लॉय विच आर बीन सिलेक्टेड। जो नए एम्प्लॉय सिलेक्ट होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। कंपनी के बारे में सब डिपार्टमेंट से लोग आएंगे, वो बताएंगे कि हम क्या हैं, क्या करते हैं। HR डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके कंपनी में अलग अलग टीम से लोग आए, वो आपको रिप्रेजेंट करें, आपको बताएंगे कंपनी में क्या चलता है, कैंटीन की क्या फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन का कैसे कर सकते हो, सिक्योरिटी के लिए कहाँ सिक्योरिटी का कोई आ सकता है। तो दिस इज़ द थिंग्स, ओरिएंटेशन में यही ट्रेनिंग रहती है। आपको जान पहचान कराती है कंपनी, अपने से रूबरू कराती है। ओके, लाइक दैट। सो हियर it is refers to the introduction of the new employee to the existing employee, large organization और orientation program to familiarize the new employee with the existing. ओके, नए एम्प्लॉय से आपको, जो पुराने एम्प्लॉयज़ उनके साथ में आपको फैमिलियर करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको एक अच्छा फील आए कंपनी के लिए, एक नयापन ना लगे। उस नएपन को दूर करने के लिए चीज़ की जाती है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज व्हाट, जब एम्प्लॉय को ला दिया है, आपने बैठा दिया है, तो इमीडिएटली वो काम नहीं करना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा, आप उसको ट्रेनिंग करोगे। ओके, और जब वो ट्रेन हो जाएगा किसी वर्क के लिए अच्छे से, फिर उसको डेवलप करने का काम करेंगे। ओके, डेवलप में और फर्दर ट्रेनिंग कराई जाती है एम्प्लॉय की, उससे वो
बेहतर मैनेजर या फ्यूचर मैनेजर के रूप में उसको तैयार किया जाता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। ट्रेनिंग क्यों होती है? ताकि आपको जो काम सौंपा है आप वो कर लो। डेवलपमेंट क्यों किया जाता है? ताकि फ्यूचर में कंपनी को अपडेट कराना है, एक एम्प्लॉय को अपडेट करते रहते हैं उसको, ताकि उससे क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू बढ़ती है कंपनी के अंदर। दैट इज वाई डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉय। Okay, so here, to improve the competence of the employees and to motivate them it is necessary to provide training and development opportunity for the employees so that they can reach to the top and keep improving their skills. Okay, market till here. Okay, now here also this line is there. Training and development does not only motivate the employee but also improve the efficiency and work also. So you must know this. When training and development is given, so every employee will be motivated. So it is basically done to motivate the people or employees, because once they will be happy with the company, that company sub kara rahi training development, so everybody will be happy there. Okay, then after this what happens? See, training ho gaya, sub ho gaya. Now what happens? Now after this performance appraisal. Okay, performance appraisal starts. So performance appraisal is what? Here also you can see this flow chart is there. This is the training and development. You can remember that this is the staffing process here. Just remember this chart. Okay, just remember this chart. You must remember this every staffing process step. Now what happens? In most of the large scale organization there is a separate human resource department which performs the staffing function. Okay, but in the small organization the line managers only perform all the functions. Okay, so in small company, what happens? Such kind of function is not there. There will be some manager will be employing the people, but that is not human resource management. In this big companies or good multinational companies, only you can find this human resource management team is there, and they are taking care of the employees. So how do they take care? What they do? Performance appraisal, as I already told you. What is performance appraisal? After taking the training and performing the job of some time, there is need that employee performance must be evaluated. जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका इवेल्यूएशन होगा कि उसने पूरे साल में किस तरह से काम किया. ओके, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल रेफर्स टू इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स. देखो हर एम्प्लॉय से कुछ डिमांड किया जाता है. ओके, तो उस चीज़ के हिसाब से, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उससे काम लिया जाएगा. सो द स्टैंडर्ड्स आर मेड टू नो द एम्प्लॉयज़ इन एडवांस. उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि आपसे हमने क्या डिमांड किया है. इसको बोलते हैं KPIs, की परफॉर्मिंग्स इंडिकेटर्स. ओके, तो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? वो एरियाज, और की रिजल्ट एरियाज भी बोलते हैं कुछ कंपनी में, KRA बोलते हैं, KRA की रिजल्ट एरिया, KPIs भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ओके, इन कंपनीज विल, व्हेन यू जॉइन इन द कंपनी, यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ थिंग्स और सच काइंड ऑफ टर्म्स. अभी बुक में नहीं मिलेगा, लेटर ऑन जब आप काम करोगे कंपनी में तब आपको ये टर्म्स पता चलेगी कि ऐसा भी कुछ होता है. ये कुछ नहीं होता, ये स्टैंडर्ड्स ही होते हैं. आपसे पहले ही बता देंगे कि भाई हमने आपसे डिमांड किया, साल के अंत में आपने कितना परफॉर्म किया, उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड किया जाता है. फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको मिलता है. सो आइदर आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपके सुपीरियर्स, आपके बॉस आपको रैंक देते हैं, और जो रैंक के हिसाब से अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो आपकी सैलरी, प्रमोशन सब मिलेगा. इफ़ यू आर अ बैड परफॉर्मेंस तो हो सकता है सैलरी उतनी नहीं बढ़े. हो सकता है होगा पुअर परफॉर्मर हो तो हो सकता है आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी. इस तरह से वो एक्शन लेते हैं. ठीक है. नाउ प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. ओके, द प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड एज अ हायर जॉब. प्रमोशन क्या होता है? जब आप कंपनी में बहुत अच्छा काम करते हो, ओके, तो वो आपको प्रमोट करते हैं एक हायर लेवल पे. ओके, ज़्यादा पे ग्रेड के साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है. तो जॉब सेटिस्फेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी मिलता है. जॉब सेटिस्फेक्शन तो होता ही है, सैलरी बढ़ेगी, बट आपको एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है. व्हेन यू आर प्रमोटेड, इट मीन्स एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पर. Generally, on the basis of feedback report of the employee performance, they are given the promotion and opportunities for the higher जॉब पोजीशन. अभी फीडबैक रिपोर्ट कौन बनाता है? एम्प्लॉय की आपके मैनेजर्स, जिसको जो आपको आप जिसको रिपोर्ट करते हो वो मैनेजर आपकी फीडबैक रिपोर्ट बनाता है कि ये कैसा एम्प्लॉय है. ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर ही आपकी वो लोग डिसाइड करते हैं कि कितना आपको प्रमोशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और अगर कितना पैसा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, दिस थिंग्स. Now compensation. Compensation is what?
पैसा, कंपनसेशन मीन्स आप काम कर रहे हो तो बदले में कुछ मिलना चाहिए, कंपनसेट मी, दैट इज मनी, नथिंग. So it refers to the price of the jobs. It includes pays, reward, other incentive given to the employee. It includes direct as well as indirect payments. डायरेक्ट पेमेंट्स आर वेजेस सैलरी. ओके, एक तो वेजेस सैलरी डायरेक्ट मिलता है, और इनडायरेक्ट क्या होता है, लाइक फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, इंश्योरेंस करा के दे दिया, जिसके लिए आपने पैसा नहीं भरा कंपनी को, कंपनी की तरफ से ही है. ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ कंपनसेशन. ओके, नाउ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइम्स, टाइम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड. सो कि टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड ये फाइनेंशियल पेमेंट्स होते हैं. तो कुछ लोगों को वेजेस मिलते हैं, जैसे कि मजदूरों को, वर्कर्स को क्या मिलते हैं, टाइम बेस्ड, अकॉर्डिंग टू द टाइम. अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उसके हिसाब से वेजेस उनको मिलते हैं. तो दिस कॉल्ड एज वेजेस, वीकली, मंथली, लाइक दिस, इस बेसिस पे टाइम पीरियड के हिसाब से पैसा मिलना. एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड. Okay, in this method, ये एक method है, the payment is made to the employee on the basis of number of prices or unit produced by the employees. हमने ये लोग ये चीज़ देखी थी कहीं पे. ओके, ये आपने एक प्रिंसिपल था. ओके, तो पता करके देखना कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल था. वो आपको याद आएगा कि वहाँ पर एक इस तरह की कोई टेक्निक थी या प्रिंसिपल था, जिसकी वजह से आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो. व्हेन यू मोटिवेट दिस एम्प्लॉय, ओके, when you motivate this employee, what happens, he will really be working. So यहाँ पर क्या किया जाता है, सिंपली आपने जितनी यूनिट बनाई उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है वहाँ पर. ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम था उसके थ्रू. ओके, तो उससे आप ऐसा कर सकते हो. अब किसका था, यू विल हैव टू चेक. ओके, सो सम पे प्लान्स आर टाइम बेस्ड, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन भी रखती है कई बार कंपनियां. इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है. टाइम बेस्ड तो है ही सही, बट अगर आप आउट परफॉर्म करते हो, ज़्यादा काम करते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा. दिस इज हाउ इट इज डन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर.